हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PWOnlyIAS। आज हमारे साथ हैं आशना चौधरी। देखिए, इस बार के यूपीएससी इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं एंड आशना चौधरी ने बहुत ही अच्छा रैंक हमारे सामने लेकर आए हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटजी रही। ये उनका थर्ड अटैम्प्ट था, तो पिछले कुछ अटैम्प्ट्स के ऊपर उन्होंने क्या इंप्रूव किया, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशन आशना। थैंक यू सो मच। तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने लगता है कि उसके ऊपर इम्प्रूव किया एंड इस बार आपका बहुत अच्छा रैंक आया है? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं मेंस में मोर और लेस मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की हुई थी, बट प्रीलिम्स मेरा एक वीक पॉइंट था और ये आइडेंटिफाई मुझे ऑलमोस्ट एक अटेम्प्ट के बाद लगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड अप टू द मार्क नहीं है। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस इज द की। तो बेसिकली आप कितना भी नॉलेज एक्वायर करें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इट वोंट बी सफिशिएंट। सो आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने इस बार थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की एंड समहाउ आई वाज एबल टू क्रैक इट। ओके। इस बार का भी प्रीलिम्स भी कुछ ही दिन हमारे से दूर है। तो ऐसे टाइम में जो एस्पिरेंट्स इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं, हाँ जी। उनके रिगार्डिंग आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि क्या उनको करना चाहिए इन आखिरी के कुछ दिनों में, या रादर आई शुड से एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ? बेसिकली एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा एनजाइटी ज़्यादा रहती है, तो आपको कूल डाउन करने की ज़रूरत है, कंसिडरिंग द वेदर एज वेल. So you need to cool down first. You need to identify the areas where you need to revise. So revision should be the key rather than acquiring new knowledge. Revise, revise, revise. You can try attempting some previous year question papers because they give you quite insight into how the questions will be this time as well. So you can do that, but do not attempt new practice papers. But previous year questions, solving previous year questions is a good strategy that way. दैट्स राइट। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग द सेकंड पेपर दैट इज़ सीसेट, तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। तो हाउ डिड यू टैकल दैट एस्पेक्ट? Somehow CSAT was not that difficult for me. It hasn't been that difficult for me because CSAT, I have set in a strategy wherein I need to tackle some amount of questions no matter what. So my strategy is attempting as many questions as I can, as well as making sure that my efficiency is really good there. So I cannot afford to let down my efficiency below 85%. So you need to cover more questions as well as make sure that the efficiency is also good. ओके। जस्ट अनदर एस्पेक्ट, थोड़ा इसे अलग चलते हैं। व्हेन वाज़ द फर्स्ट टाइम कि आपको लगा कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए? ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? गवर्नमेंट सर्विस के लिए जाना चाहिए। बेसिकली आई वाज ऑलवेज एनकरेज्ड, आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज एंड आई वाज ऑलवेज एनकरेज्ड बाय माय एल्डर्स to try my luck in the government services, but I was not very convinced about the government services. And after my graduation, while I was considering a lot of options, civil services was one of the many options there. But when I started preparing for civil services, I thought I would just give a look to the syllabus, would see how it pans out. And when I started preparing for it, that's when I realized the depth in which I'm going regarding these services and my penchant for service. And that's how I got into it. Okay, that's nice. Just another aspect onto that. You were doing bachelor's in English, and then after you chose the optional anthropology, and currently you're doing masters also. I mean in international relations, right? Yes. तो व्हाट इज दिस कि आप कभी एंथ्रोपोलॉजी कैसे चूज किया आपने इंग्लिश पे? Basically, diversity is what I look for. Okay. Even about the services, it was more about a diversity of experience the services would provide me. Talking about English literature, I'm still in love with the subject, but I did not choose the subject for my optional because 75% of the syllabus was actually coinciding with my graduation syllabus. So I did not want that repetition of syllabus. I wanted to learn new things, and anthropology not being very distinct from English literature, I opted for anthropology.
Also, anthropology, I was introduced to it via literature. So this is kind of funny. So I was writing a paper on globalization and theater. That's when, regarding the exhibition of African women, Hottentots, the tribes, that's how I was introduced to some scholars from anthropology, and I decided to take up anthropology. Regarding my master's in international relations, again, I mean, I started liking international relations as a subject after my preparation, 1 year of the preparation, and that's when I thought it's an interesting subject. I need to learn more about it. आई थिंक दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग. नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज़ कि उनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है कि उससे मैच करता है सिलेबस, तो हम उसको ले लेते हैं ऑप्शनल. बट यहाँ पर द डाइवर्सिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो दैट क्लियरली शोज कि ऑप्शनल चूजिंग कैन बी वेरी पर्सनल थिंग. इट कांट बी लाइक कि अच्छा मुझे भी ये है तो मैं भी ये चूज़ कर लेता हूँ, या टॉपर ने ये चीज़ चूज़ करी तो मैं भी कर लेता हूँ. दैट शुड नॉट बी द केस कि हमारी जो कहीं ना कहीं कॉलिंग होती है, बी डाइवर्सिटी की, या फिर जो आपने जिसके उल्ट आपने बोला कि हमारे ग्रेजुएशन से कितना मैच कर रहा है, तो इट कैन बी पर्सन टू पर्सन. ओके, कमिंग टू द मेंस एस्पेक्ट, तो मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे आप इश्यूज देखते हैं, ठीक है. ओवर द टाइम, ईयर ऑन ईयर सिलेबस भी चेंज हो रहा है. सिलेबस रादर आई शुड से कि करंट अपडेशंस आप कैसे करते थे? ऑलराइट, सो बेसिकली करंट अपडेशंस के लिए मैं मंथली मैगजीन्स यूज़ करती थी, और साथ ही साथ आई ट्राई टू इंटीग्रेट बोथ माई प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, कंसिडरिंग दैट द टाइम विच इज़ गिवन फॉर मेंस इज़ क्वाइट लेस. सो मैं डेली करंट अफेयर्स जो करती थी, उनके मैं नोट्स बनाती थी, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाती थी, एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू रिवाइज देम इवन फॉर मेंस. So that's how I was able to do current updation as well. So I try to integrate my preparation at every step. तो प्रीलिम्स प्लस मेंस, Prelims दैट्स द plus की. mains, yeah. ओके, एंड कमिंग टू द न्यूज़पेपर एस्पेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई बार रहता है कि कितना टाइम लगाना चाहिए न्यूज़पेपर के ऊपर, शुड बी उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, या रेदर वी शुड जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उनके ऊपर पूरा रिलाई करें, तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल अप्रोच? Basically, there is no substitute for newspapers as far as I feel. So newspaper reading is a must. Talking about the time, it's a journey. Newspaper reading is a journey. So when you begin that journey, it is gonna require you some time. It's gonna take 3 to 4 hours. Like it took 3 to 4 hours for me when I began reading the newspaper. After that, after a month or 1.5 months, I was able to screen out which news is important for me and which is not. And that's when it gradually became less, to the point that by the time I wrote my mains, I was able to complete my newspaper in 20 minutes, in about 20 minutes. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहते हो, यू कम बेटर विद इट. Yes. स्टार्टिंग में हमारे पास जैसे ना सिलेबस हमें उतना नहीं आइडिया होता, तो सिलेबस के साथ कौन सी न्यूज़ रेलेवेंट है, हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी, हमें पॉलिटी पढ़नी है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आई थिंक स्टूडेंट्स मस्ट बी इंटीग्रेटिंग, ताकि ना वो देख पाएँ कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना. Yes. राइट. तो कमिंग टू द इंटरव्यू एस्पेक्ट, द थर्ड स्टेज, द फाइनल स्टेज बेसिकली, तो उसके रिगार्डिंग आपकी प्रिपरेशन कैसे रही, हाउ डिड यू मैनेज? कि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी डाउट होता आता है कि हमें नेक्स्ट प्रीलिम्स भी देना है, Yes. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट थिंग? Basically, I was lucky enough that my interview was placed at the right time. It was not too soon. It was placed on 28th March. So it was not very soon to my mains result, but also not very soon to the next prelims. I was able to prepare. I had ample 2 months to prepare for the next prelims. And I had ample time to prepare for the interview as well. My interview preparation has mostly been current based, so I read the newspapers and totally relied on 3 newspapers. I read the Hindu, the Indian Express, and the Economic Times, and gathered diversity of points from there. Okay. The team of PWOnlyIAS also conducted the interview guidance program. How far was it helpful in your preparation? It was very helpful. The panel was very diverse. I got to face a lot of questions there, and those questions were challenging but also moderate. So it was not like the level was set at one level. It was not set at one level. It was basically diversity. There was diversity of levels, easy to moderate to difficult, and also the diversity of questions from DAF, from current affairs, from my hometown, from everywhere. So it really helped. Also, the panelists I really liked. Okay, okay. One last question with regards to your preparation strategy. Like in the last 2 attempts, you were not able to clear prelims by a little bit margin.
but this time you were able to clear it very well. So what changes did you made in your preparation in this attempt? This attempt was fully focused on practice, so I made sure that my concepts were clear beforehand and that I'm able to practice the same concepts as much as I can. So revision and practice were the key rather than acquisition of knowledge. Very right. Last question with regards to थोड़ा कई बार स्टूडेंट्स ना सोच कर आते हैं इस जर्नी के अंदर कि हम पहले अटैम्प्ट में इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकाल लेंगे. जनरली हर स्टूडेंट का ये एस्पिरेशन होती है, पर वो थोड़ी कई बार जर्नी तो थोड़ी बड़ी लंबी चली जाती है. कई बार 3 साल लग जाते हैं, कई 5 साल भी लग जाते हैं, 6-7 साल भी लग जाते हैं. तो ऐसे टाइम के ऊपर थोड़ा मोटिवेट रहना काफ़ी मुश्किल रह जाता है. तो व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर, एंड कैसे आपने उनको ओवरकम किया? After my first failure at clearing prelims, I felt very demotivated for some time. However, I tried to listen to the psychological talks, to read some self-help books, talk to my family. So these little things really help. Also, you need to acquire a hobby. Yoga was one stress release factor for me, a cathartic experience, I would rather say. So you don't need to focus entirely on your studies. You can also do something on the side, like not entirely depend on the process, because I was also doing my masters alongside. So it was not as UPSC centric. My life was not very UPSC centric. I was doing diverse things, so that I believe that helped me as a pressure release for me. That worked as a pressure release for me. आई थिंक डाइवर्सिटी आपका एक बार बार वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली राइट. काफ़ी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, अब यूपीएससी की तैयारी है तो बिल्कुल चीज़ों को कट ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल दुनिया से मिलना ही नहीं है. बट ये हर चीज़ हर पर्सन के लिए अलग तरह से वर्क करता है. कई स्टूडेंट्स को होता है कि नहीं, हमें जो अपना हॉबीज़ हैं, जैसे आपने योगा की बात, कई स्टूडेंट्स को होता है कि हमारी सोशल सर्विस हो गया या क्रिकेट को फॉलो करना हो गया. तो दोज आर द थिंग्स जो हमें एक सैनिटी लेके आते हैं कि प्रेपरेशन भी करनी है, बट साथ ही साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस रिलीवर की तरह वो वर्क करते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आशना ने हमें बताया है. तो आई होप कि आज के इंटरव्यू से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी कि कैसे इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं. जो तीनों प्रोसेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वहाँ पर हम अपनी प्रेपरेशन को कैसे अलाइन करना चाहिए ताकि इस एग्ज़ाम को हम बेहतर ढंग से अच्छे से क्लियर कर पाएँ. तो थैंक यू सो मच आशना. वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल द करियर एंडेवर्स. Thank you so much. थैंक यू.